Hi everyone, welcome back to our YouTube live. I hope everyone's doing really well. आप सबने देखा होगा कि हमने अभी रिसेंटली अपना थर्ड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट लॉन्च किया है और ये रिपोर्ट अभी लाइव है हमारे ब्लॉग पे और इसका जो पीडीएफ वर्जन है जिसमें फुल डिटेल्स है मेंशन सब कुछ अभी उस प्रेस रिलीज में आपको दिख जाएगी। तो आज हम इसीलिए गैदर हुए हैं यहाँ पे ताकि हम ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सके सबके लिए, क्योंकि कुछ-कुछ टर्म्स हैं जो थोड़े टेक्निकल है, जो थोड़े एकदम क्रिप्टो नेटिव है और वो आपको शायद समझने में थोड़ी मुश्किल हो, तो इसीलिए वी आर ट्राइंग टू सिम्प्लीफाई इट एज़ मच एज़ पॉसिबल। तो हम पहले थोड़ा बैकग्राउंड में बात करते हैं इसका कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट हमने स्टार्ट किया था टू गिव एवरीवन एन ओवरव्यू ऑफ what goes on in the platform for a yearly format or like 6 months, every 6 months, how it happens on like our platform. So for example, if a lot of users are on the platform whom we have onboarded and a lot of trading has taken place, we want to give everyone an overview of how it has been, like what is the trade pattern like for users, what is the education level that we have reached in terms of spreading awareness for people whom we want to sort of onboard on our platform. Also policy wise, what is it that we have done in terms of collaboration with other education agencies to spread the word about blockchain, etc. And finally, if there are any sort of loopholes in terms of security, or example, if there are any breaches or if there are any frauds, we also want to highlight that so that people are sensitized। और कोई भी ये जो फेस कर रहा है, क्रिप्टो यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही न्यू है इस इकोसिस्टम में, तो उनके लिए एक सिक्योर ट्रांसपेरेंट वे में वो ट्रेड कर सके। तो यही ऑब्जेक्टिव है हमारा ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के साथ। और आपने अगर हमारे पहले 2 ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि कितने सिंपल वे में हमने एकदम ब्रेक डाउन किया है कि कैसे ट्रेड्स होते हैं और कैसे-कैसे हम कंप्लाई करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ। जैसे कि आपको पता होगा कि रेगुलेशंस जो है अभी भी क्रिप्टो में कन्फर्म नहीं है, काफ़ी अभी एम्बिग्यूइटी है वहाँ पे। तो इसीलिए क्या होता है कि क्रिप्टो में जैसे टैक्स इम्प्लीकेशंस और जो भी है ट्रेडिंग जो भी है आप कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं यूज़र्स के दिमाग में। और कभी-कभी ये होता है कि दे टेक सम मिसस्टेप्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। तो ये हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉड्स और स्कैम्स जो है वो बहुत ही कॉमन है, ये आपको ट्रेडिशनल फाइनेंस में भी दिखेगा, ये बैंकिंग में भी होता रहता है और इट्स नॉट अ सरप्राइज़ कि क्रिप्टो में भी ये सारे रेप्लिकेट हो रहे हैं। बट ये जो है वो हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि क्रिप्टो के साथ वी प्रोवाइड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज एवरीथिंग इज आउट देयर, एवरीथिंग इज फॉर देयर फॉर पीपल टू सी, सो देयर इज नथिंग टू हाइड। तो इसीलिए हम थर्ड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी हमारा यही हाईलाइट करता है कि जितने भी पॉसिबल हुआ हमारे तरफ से हमने रेगुलेटर्स के साथ कंप्लाई किया है 100%। और हमने अपने अपने लेवल से एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ ब्लॉकचेन, awareness of crypto, so that anyone who's using crypto or is going to use crypto in the future is very sure of what they are getting into, और कोई ऐसा स्टेप्स नहीं ले रहे हैं जिससे उनका पर्सनल पोर्टफोलियो और उनके पर्सनल फंड्स को हार्म पहुंचे। तो ये हम अभी डिटेल्स में विल टॉक अबाउट इट। और okay, I can see a question and I think I'll just take that up quickly before I move on to our speakers. Anand Singh is asking, मेरा money safe है कि नहीं? Anand, we just want to assure you your funds are completely safe on WazirX. I think we have communicated this as well before, and we just want to reiterate that there's nothing wrong with your funds. They are completely safe, so you can trust us. And if you have any questions, you can write to our support team for any queries that you might have. तो अभी बिकॉज़ ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट एक बहुत सारी टीम्स मिल के बनाती है, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो टेक्निकल भी होते हैं, उसमें लीगल भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे डेटा होते हैं जो आपको रन थ्रू करना पड़ता है, जिससे आपको ये सारे रिजल्ट्स आते हैं आपके पास, जैसे यूज़र डेटा पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न एक्सेट्रा। तो अभी मैंने अपनी टीम से वी हैव समवन फ्रॉम आवर डेटा एनालिसिस टीम, वी हैव समवन फ्रॉम आवर लीगल टीम, वो आपको डिटेल में बताएँगे कि कैसे ये प्रोसीजर होता है। और मैं आपको एक-एक करके एक-एक एस्पेक्ट पर हम लोग टच अपॉन करेंगे और जो हमारे स्पीकर्स हैं वो अभी हम आपको डिटेल में समझाएँगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बेसिकली। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिप्टो
न्यू इंडस्ट्री है। आई मीन इट्स वेरी न्यू, यूज़र्स जो है लास्ट 4 इयर्स में ही ज़्यादातर आए हैं यहाँ पे। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बनाना ऑन बिहाफ ऑफ WazirX और एनी क्रिप्टो ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर। क्योंकि हम ये कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट 3 टाइम्स। आई थिंक वी नो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस बट इट्स नेसेसरी। तो आई थिंक ओवर टू द डेटा एनालिसिस टीम, please tell the audience that how important it is to ensure there's security and transparency when it comes to crypto. Yeah. Hi. So yeah, security, is extremely important when it comes to cryptocurrencies. Cryptocurrencies, as we all know, is a digital asset, right? And being digital, it is vulnerable to hacking and other forms of cyber attacks, right? So if the security of cryptocurrencies is compromised, right, there's a loss of user funds, right, which in turn undermines the confidence of users as well as the broader ecosystem of cryptocurrencies, right? So ensuring security always not only helps protect funds of users, but it also helps and helps in building trust, right, among cryptocurrency traders, right? So obviously it is very essential for cryptocurrency community, right, to take right steps, right, in order to protect user funds as well, right? There are certain things like using secure wallets, right, keeping your passwords safe, right, keeping your keys, not keeping your passwords and keys in cloud storage or anywhere else, right? So these kinds of steps if we take, so yeah. अभी हम लोगों ने जब अपना रिपोर्ट बनाया तो हमने देखा कि ऑनबोर्डिंग लाइक यूज़र ऑनबोर्डिंग पे भी हम लोग कितना ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी यूज़र्स हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हैं, दे कम विद अ वैलिड आईडी प्रूफ और वो अपने रियल आइडेंटिटी के साथ आ रहे हैं, सो दैट एवरीथिंग आउट देयर इज़ सिक्योर एंड वी आर नॉट डीलिंग विद समवन हू इज़ like involved in any identity theft or anything as such. So just over to the legal team, I want to understand what is the step of onboarding a user and like what is the right way to do it for any exchange for that matter. Hi everyone. Um, KYC and enhanced due diligence should be a strongest pillar. KYC for crypto exchange act as a gatekeeper. I may say that. Hence, having a strong base is really important. Verification of documents which are submitted by a customer digitally can be challenging at times. However, a systematic approach like set of proof of identity should be requested from the users. Video KYC should be requested. PEP check, that is politically exposed personal checks, should be conducted by the exchanges. Bank verifications are some of the basic and helpful steps for onboarding the processes. ओके, थैंक्स। सो अभी थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके आप बता सकते हैं कि जैसे यूज़र ऑनबोर्डिंग इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने काफ़ी सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी देखा है इस बार। तो कैसे ये इम्पैक्ट करता है? क्योंकि हमारा जो रिपोर्ट है वो हाइलाइट करता है कि कुछ टाइप के फ्रॉड्स जैसे कि people are being called and conned by people like we will give you 10 times your return on your crypto investment। तो ऐसी चीज़ें अगर होती है तो उसमें यूज़र आइडेंटिटी कितना वैल्यूएबल है। तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि कैसे हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स और हाउ डू वी प्रोटेक्ट यूजर्स। तो ये हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू एंश्योर दैट ये हम ऐसे कर रहे हैं ताकि जो अगर सिक्योरिटी कोई हमें हमें पता चले कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन तो हम उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकें। तो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट? So as I said that if you are providing a right set of KYCs or a right set of documents, those need to be verified by the exchanges. Once that has been verified with the exchange, it is like they have the systems, they have the tools for verifications, and hence that helps a lot for all the exchanges out of here. ओके, ओके। पर एक चीज़ क्लैरिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ये परसेप्शन बहुत कॉमन है कि क्रिप्टो इज़ यूज़्ड फॉर इलिसिट एक्टिविटीज़। तो मैं पहले ही ये क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि जो वॉल्यूम है इलिसिट एक्टिविटीज़ की वो एकदम माइनस्क्यूल है ऑन ऑफ ऑल द ट्रेड्स दैट टेक प्लेस। तो अगेन आई वांट टू आस्क द लीगल टीम इफ यू कैन
add a little bit about how many, like the volume, total volume of transactions on the platform, और उसमें से suspected activities which were illegal कितने थे? So, according to our data, the overall illicit activities related to actual blockchain or VDF fraud scam overall in the crypto industries were recorded around somewhere around like 4 to 5%. Okay, that's what we have recorded. And the illicit activities which were very common were illegal fund transfers, third party account transfers, crypto scam, cheating, forgery of documents, or someone else is providing the documents, and all sort of things. These are the most common crimes we have observed. ओके, बट आई थिंक ओवरऑल जितने ट्रांजैक्शंस थे उसमें से बस 0.08% ही थे जो सस्पेक्टेड थे, एंड अकाउंट्स भी were not like blacklisted randomly, but there was a due diligence that was done. And उसके बाद अगर कोई सस्पेक्टेड कुछ था, तो उसके बाद ही हम लोगों ने जाके we spoke to the concerned law enforcement agency. Then we did our due diligence in the investigation process, and then only we went ahead and blocked those accounts. So I think it's very important to clear this out, that 0.08% of transactions on the platform in the last 6 months were suspected to be fraudulent. Yeah, So those are yeah, very important. I think, yeah, just to set the record straight. So I want to go back to our data analysis team. I want to ask that support system is also a vital process for any crypto platform, right? क्योंकि बहुत न्यू एसेट है ये, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उनके उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये सपोर्ट टीम कैसे असिस्ट करती है? या तो फिर आप ऐसा सिनेरियो आता है कि कभी यूज़र का अकाउंट किसी प्लेटफ़ॉर्म ने ब्लॉक कर दिया क्योंकि their transactions were flagged to be suspicious, and it might not have been the case. So how do they reach back to the team and get their account whitelisted again so that they can continue their activities? Got it. Right. So, the support process at WazirX, right, is designed in such a way that it provides assistance and guidance to users who are, new to investing in cryptocurrencies, basically, right? They can, reach us at via our website, WazirX website हो गया, then WazirX का mobile application हो गया, right? जहाँ से they can directly connect with our customer support team, right? Our customer support team is available 24/7 every day, right, to answer any question which customers might have, right? So be it setting up an account, कि ट्रेड कैसे करें या फिर कैसे फंड डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, वॉट एवर द केस में बी, राइट? We have a team to support customers, right? Additionally, we also have a range of educational resources, wherein like we have FAQ section on our website, right, wherein there are a lot of questions which users have asked and we have answered them, right, wherein users can come and check about what's been happening, right? Then there are a lot of guides and tutorials, right, available on YouTube and on our platform, right, wherein customers can come and check key how to trade, how to do a P2P trade, for example, right? So yeah, the overall system is designed in such a way that users feel confident while trading on our platform, right? And just to ensure that they have access to all the right information, right, before making any informed decision about the cryptocurrency purchase. When it comes to blocking of any account, right, अगर कोई account block हो गया, right, activate करना है, they can directly reach out to us via our support channels, right? And अगर उनके पास में कोई वेरीफाइड सर्टिफिकेट है फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज, राइट, then we obviously like do a due diligence, right, of their account and their trades and whatever activities which have happened through their account, right? And then once we find it is genuine, then we obviously unlock their account and so on. Yeah. Okay, okay. And I think the process is also pretty robust, right? Like anyone who reaches out also gets a response within, say, 24 hours, and their queries Yes, are yes. answered. And I think that's very important for any support team, especially when dealing with Exactly. assets such as crypto. Mhm. So I think another aspect is because one of the highlights of our report was कि हमारा compliance rate जो था law enforcement agencies के साथ वो 100% था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेगुलेटर्स के लिए और हमारे अपने यूज़र्स के लिए भी इट्स अ वेरी आई वुड से अनसर्टेन स्पेस राइट नाउ, राइट? तो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ also being navigated by us as we speak, and that's why
for any transaction, when these are flagged as suspicious, or these are flagged or as complaints to the law enforcement agencies, and they have to come and investigate it, what is the right way to go about it? तो we how do we deal with them? तो ऐसे जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आया तो हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारी तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या आइडियल स्टेप्स है, और यूजुअली क्या होना चाहिए ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए? तो मैं अपनी लीगल टीम से पूछना चाहती हूँ कि ये आप अगर डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं। So, any LEA request we receive from any regulator is the topmost priority for all of us, be it the founders of the company or the junior analyst. So we treat it as a most prioritized thing for us. That is where we have like 100% record of compliance with the regulator. Now, the process is like if we have received any LA request from any authorities, we receive a written notice from them requesting certain set of data with regards to address or user data. So we have our systems inbuilt in such a manner that we can provide them that data, and it's touch what we can say this that we attempt to respond to the regulators within half an hour of time frame. So yeah, so that is where it helps us to achieve the targets of helping the regulators or any LEAs whenever required. ओके, आई थिंक दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो ये है कि क्योंकि हम लोग नॉट जस्ट इंडियन रेगुलेटर्स, हम लोग ग्लोबली बहुत सारे रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ डील कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट हाउ फास्ट वी आर रिस्पॉन्डिंग बट हाउ एक्यूरेटली वी आर रिस्पॉन्डिंग विद ऑल द इंफॉर्मेशन इन प्लेस, एंड हम लोग उनको राइट वे में असिस्ट कर रहे हैं, और टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज फॉर सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट फॉर एवरी वन। ओके, एक क्वेश्चन है, तो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर सेशन, एक क्वेश्चन है मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। सचिन कुमावत हैज़ आस्क्ड, दिवाली गिफ्ट का रिवॉर्डेड नहीं मिला हमें। ओके, सो सचिन, आई जस्ट वांट टू से कि दिवाली गिफ्ट का रिवार्ड जो है वो सबको डिसमिनेट हो चुका है, एवरीवन हैज़ रिसीव्ड इट। इफ़ यू हैवंट रिसीव्ड योर्स एंड इफ़ यू आर एलिजिबल, प्लीज़ रीच आउट टू द सपोर्ट टीम। हमारा सपोर्ट टीम का आईडी है support.wazirx.com। प्लीज़ आप उनको ईमेल करो और जस्ट लेट देम नो व्हाट योर कंसर्न इज़, दे विल हेल्प यू आउट, एंड आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स यू कैन ऑलवेज आस्क अस। Okay, so back to our session. Now, there's another thing I want to understand. Now, how do we help these law enforcement agencies solve the cases? Now, it's very easy for us to sort of give them the information that they require and all of that. But what is it that we do here? Besides providing information, what is the value that we add? Because I think as as we have mentioned in the transparency report, there were some of the cases that we were highlights of this the last 6 months, where we collaborated with some regulators both India and abroad. So maybe the legal team can talk about one or two of those cases, like what was the nature of the cases and who were the regulators whom we collaborated with in that regard. Yeah, sure. So, one of the cases where legal team assisted the Kolkata police in nabbing some of the criminals who were defrauding people through a mobile gaming platform. That was one of the case. Another case where legal compliance WazirX team has helped was in the Chinese loan app case. That was with regards to that the users were duping people through the fraudulent transactions. We assisted Maharashtra, legal authorities in that case. And lastly, we also assisted recently Bhubaneswar police identifying the crypto account of an user involved in digital asset frauds. So apart from this, there were many, but these are the highlights of the cases where legal and compliance team have actually assisted them. Okay, I think that's really cool. And we also have some, positive testimonials from them, talking about how our assistance has actually helped them nab criminals or solve cases. So I think it's really nice that, we have been able to sort of set that mark for ourselves, or हमने एक sort of benchmark create किया है, not just for ourselves but also for the industry, की transparency कितना important है सबके लिए, इतना, because if we have to move forward towards mainstream adoption of crypto, it is very important that user funds are safeguarded and everyone's interests are protected.
तो क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी एक इलैबोरेट प्रोसेस था, मैं ये अपनी डेटा एनालिसिस टीम से पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कंपाइलिंग ऑल द डेटा, और कैसे ये हम लोग सॉर्ट ऑफ ये एनालाइज़ करते हैं पैटर्न्स जो है, और कैसे ही हम लोग एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में डालते हैं? क्योंकि ये जानना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है यूज़र्स के लिए भी, कि कैसे हमने ये बनाया है और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमने पुट किया है इसमें, सो दैट दे आल्सो नो कि वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। Obviously, yeah. So obviously it's a very long process, right? That we have to basically gather data from multiple data sources, obviously, right? And as we have, obviously transaction level data, so collecting data is a task. And once we obviously collect the data, then obviously there's a lot of due diligence also has to be done, right, in order to ensure that whatever we are about to report, right, needs to be accurate, right. This involves various types of analytical techniques, right, to identify patterns, right, trends or relationship within the data itself, right. uh, so yeah, a lot of statistical analysis हो गया, comparative analysis करते हैं data के बीच में, right. And yeah, all this stuff is required to do. And once we have the data in place, then obviously then comes into picture the drawing conclusions, finding out insights from what data we have with us, right. So yeah, that was the whole process basically. Okay, I think that gives us some clarity. Or, this is basically what we have in terms of our transparency report. But मैं अपने audience से पूछना चाहूँगी, we are here to answer any questions you might have regarding the transparency report. So this session is dedicated to that. So please feel free to ask us any questions that you might have had, कि अब transparency report पढ़ते हुए कोई questions अगर आपके mind में आया है, प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क। अभी हम लोग आंसर करेंगे, या आप बाद में भी पूछ सकते हो हमको ईमेल करके, और यू कैन ट्वीट टू अस। एनीवे यू हैव क्वेश्चंस, यू कैन स्टार्ट। ओके, सो वेट, वी हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ। uh, uh, Akash. Okay, Akash wants to know, he's starting his crypto journey with WazirX and he's not using it because liquidity issues. I think, Akash, best to stick to questions about the transparency report. But I just want to say that if you're starting your crypto journey, all the best. You will not be disappointed, even if there are dips and highs in the market. There's nothing to worry about. And as far as liquidity is concerned, I would say that we are at a better place than where we were 2 3 years ago, and we are only going to better greener pastures, I would say. So you can trust crypto, you can trust our platform. So yeah, I would say go ahead. But any questions you might have had with the transparency report, please ask us now. Do we have any questions? Okay, don't think so. No questions regarding the transparency report. So, because this session was dedicated to that, we just want to conclude by saying that the transparency report was covering the transactions from May to September of this year, and we tried our best to share a detailed picture of everything that went down on our platform during these months. We are also in the process of releasing our year-end report, so please stay tuned for that, and it will be coming your way shortly. Till then, any questions you have, like I said, please feel free to tweet to us, email to us, and don't forget to subscribe to our channel to make sure you have all the updates for upcoming videos too. Great. Okay, I think we are done, and thank you so much for joining. Thanks for all your questions, and yeah, thanks a lot. And have a good day and have a good week ahead. Yeah, Thank you have a so great day, much. Shramana. Yeah, Thank you, team. Thanks a lot. thanks a lot. Bye bye. Bye.